Hello everyone, welcome back to Diversibility. This is your host Sudhanshu Khurana and today I'm at SOL's campus, Delhi University. So आज जो है आज एक जॉब फेयर हो रहा है यहाँ पर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. काफ़ी सारे जॉब फेयर्स अभी रिसेंट में दिल्ली में हो रहे हैं एंड ये जो जॉब फेयर है ये ऑर्गेनाइज कराया गया है बाय समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड. काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स भी आज आए हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कैसे ये ऑर्गेनाइज करा जाता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर और किस लिए ये बेनिफिशियल है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में चलते हैं. This video is just for a demonstration to show that how different organizations are conducting job fairs pan-India for persons with disability. ये particular job fair already कुछ टाइम पहले conduct हो चुका है. यहाँ पर रैम्प है, स्टेयर्स हैं, तो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है ये कैंपस थोड़ा. एंड सामने ही यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन बूथ है. आप अगर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आके अपने लिए फॉर्म ले सकते हैं या फिल भी करवा सकते हैं आगे. यहाँ पे काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं इनके, SOL के भी और डिफरेंट NGOs जो हैं इनके साथ सपोर्ट में. सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर आना है एंड अपना रिज्यूमे लेकर आना है एंड बाकी आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप उसे फिल कर सकते हैं एंड ये आपका डन हो जाएगा. यहाँ भी काफ़ी सारे लोग जो हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल कर रहे हैं. एक चीज़ है कि ये जो जॉब फेयर्स हैं इनके अंदर डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करती हैं डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए. तो यहाँ पर डिसेबिलिटी कैटेगरी मेंशन करी जाती है एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आपको मतलब कैटेगराइज करके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती हैं कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप चाहें और अगर आपको लगता है कि आप डिफरेंट और जॉब्स में भी क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं. The idea was to create an opportunity for those who are not able to reach to the corporate and also giving opportunity to corporate to make sure the youths who are not able to reach to them or they are not able to reach out to them. So we will be creating a platform wherein we will be bringing both of them together and proceeding further we will be having or creating an opportunity for jobs. So in the entire 3 years of time, so far altogether we have conducted around 133 job fairs all across India. Wherein we had close to 44,000 youths like you who joined hand together with us. And out of that, around 14,000 of the students of the youth were able to place in partnership with more than 800 corporates. सो यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयर्स हैं. यहाँ पर ऐसे अलग अलग एम्प्लॉयर्स बैठे हुए हैं अपने अपने बूथ्स में एंड कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं. इन टोटल यहाँ पर 17 प्लस कंपनीज़ हैं एंड और भी कंपनीज आती रहती हैं. कुछ कंसल्टेशंस भी आए हुए हैं जो कि आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली आपको अदर कंपनीज़ के अंदर ऑफ़र कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर डिसेबिलिटी, क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल्स जो भी हैं आपकी. So we have a volunteer here. She is Vaishnavi. Here is Vaishnavi, and she is pursuing her MBA from Delhi University School of Open Learning in Human Resource Management. And the sole reason for volunteering for the event like this is as I'm preparing and pursuing my MBA in Human Resource Management. Human Resource Management is not about just dealing with normal peoples or people with similar abilities. We have a wide variety of people with different human needs, different physical needs, different psychological needs, and with different group of people. So for knowing the subject, I wanted to volunteer here. We have AK Networks here and we have Pooja here, Sandeep here from Shiva Logistics, Simran from Atypical Advantage, Gaurav here from Randstad, Anurag from Compass Group. Actually, I'm the founder of the AK Network. Right now, I'm hiring for picker packer and DO category. We have a hiring for a housekeeping profile. We are based in the pan-India level. We are recruiting the candidate to our clients. We are hiring for the food and food services. We are hiring for housekeeping. We are hiring for culinary kind of a profile. We are hiring. There are various clients. We have to offer services.
like Microsoft, Amazon, and all these kind of client we have. Right now, we just shortlisted 5 candidates. You have shortlisted 3 candidates. We have done almost 25 selections out from here for PWDs and for the NAPS hiring and as well as for the normal hiring. Atypical Advantage is basically largest livelihood platform for people with disabilities. So we are not actually hiring for one particular profile, but so we are partnered with more than 250 corporates across the country, and we are hiring for different profiles. So according to the people, skills and capabilities and potential, we will screen the profiles and then we will put them into a particular role, into a particular corporate. So that is what we are doing here. Have you ever participated in any job fair like this before? Many. We Many. did, I think, in Delhi NCR itself only we did in this month. This is the third one, right? This is the third one we did it. Last week we did it in Noida, and this is the third one. So we have placed more than 1,500 people with disabilities till now, and our platform is basically a job portal where we have more than 14,000 candidates with disabilities who are actively looking for jobs. Were you able to select any candidates for? Yes, the number is 20, and if we talk about the diversity hiring also, there is 6 to 7 diversity hiring we did it, which is good for Gurgaon as well as for Noida location as well. So we have 3 different verticals. One is the inclusive hiring vertical, which we have already discussed right now. The other 2 are the performing vertical and the art vertical. So in performing vertical, we have people, different people with disabilities who perform different kind of talent, be it singing, dancing, stand-up comedy, motivational speaking, anything it can be. So we create the profile on our platform and we give them paid shows. So this is the performing vertical, and the other vertical that we have is the art vertical, where we sell paintings made by artists with disabilities. We are having disabilities, LGBTQ as well as transgender hiring also we did it, particularly in Bangalore and Chennai we did it recently. We have shortlisted a few candidates for voice profiles, mainly voice processes. So hoping to have a good response there. Accommodation depends upon the the client wise, the site wise, and the location wise. Yes, we do have with some clients in Gurgaon. So this was the job fair organized by Samartham Trust for the Disabled at SOL Delhi. इसके अलावा इसी टाइप के और भी जॉब फेयर्स होते रहते हैं. आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके स्टेट में या आपकी सिटी में ये इस टाइप के जॉब फेयर्स हुए हैं, नहीं हुए हैं. अगर हुए हैं, आपने कभी पार्टिसिपेट करा, आप एज अ वॉलंटियर गए या एज अ एप्लीकेंट गए, आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना. एंड चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. इसी टाइप का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा. बाय बाय.